Do you think CA degree helps you in your business? But the way I plan, the way I execute, the way I think, I'm a very CA at heart. हम बोलेंगे अगर इंडिया मेरी जन्मभूमि थी तो साउथ अफ्रीका मेरी कर्मभूमि थी. I decided कि इंडिया मूव होना है because had to start from scratch again. So to start a company, what all things are required? How to execute an idea more than the idea itself. I was happy to be a follower, but when there is no good leader to follow, you have to lead. जिधर भी कुछ फ्री मिल रहा है मतलब you are the product. You are the product. Right. Like we have narrowed it down to a science, we have narrowed it down to processes. हमें तो स्टार्टअप इंडिया की टीम से कॉल आ गया था. बाकी कोर फिलोसॉफी में ही एक्स्ट्रा वैल्यू डिलीवर करना है. 35 to 45 रेंज में if you are becoming a founder, तो वो स्टार्टअप्स का सक्सेस रेट ज़्यादा है. Life is not like getting out of college and being a Shahrukh Khan. You have to learn survivability, sustainability from day one. Don't get a co-founder because you want to save money. जब आप successful हो, everybody is your friend. The moment you are not successful, Hello friends, welcome to a new episode of Sign Up Startup powered by Picasso Perry, India's premium pen brand. So in today's episode, we will know about net worth. Yes, you must have heard network is net worth. So today we have our guest who is a chartered accountant as well as company secretary. We will gain more knowledge about how to network and how to gain benefits from these kind of communities. So he is none other than CA Mohit Sureka. Hi Mohit, welcome to our podcast. How are you? absolute pleasure. Thank you for calling me. And एकदम बढ़िया. So just to give a brief about our podcast, so this is basically for the future entrepreneurs and the ongoing startups and founders. So coming back to you, the first and very favorite questions of mine is like how you reach to the stage where you are now. Like So very much a chartered accountancy family. Okay. Okay. My elder sister had a journey, all India ranks, all through state board ranks at every level. Okay. So CA was like a default mode in the family during that period. My inclination was marketing, but CA looked like the degree everybody is succeeding with. So that way I got into CACS, worked with the likes of KPMG, Panelka, Foster for about good 4-5 years in India and Dubai. Okay. That's where I got my chunk of experience from. Had a very different twist in the journey. Spent about 9.5 years abroad, out of which 8.5 years were in South Africa. हम बोलेंगे अगर इंडिया मेरी जन्मभूमि थी तो साउथ अफ्रीका मेरी कर्मभूमि थी. In that sense, so I learned to work in the true sense there. Okay. How to build companies, how to do things. 2015-16, I pivoted, getting bored, from being a finance head of a company to खुद का business चालू करना है. And for 10 years मैं सोच के बैठा था मुझे करना है restaurant business. Restaurant. Okay. Yeah, started restaurant business 2016, early 17, nearly went bankrupt with it. Because कोई आता ही नहीं है. Okay, the dilemma of a first time founder, right? Fast forward 21-22, I decided कि इंडिया मूव होना है because had to start from scratch again. Yes. I was happy to be a follower, but when there is no good leader to follow, you have to lead. So that's how Global Startups Club started. Okay. And from day one, उसका विजन हमेशा से यही था कि ये इंडिया में स्टार्ट होकर कम्युनिटी ग्लोबल जाएगी. Okay. That's why it was always Global Startups Club. There was not even for 1 second a doubt to me. We have done over 140 events all over India. We are present with monthly events in over 11 cities. Okay, Mumbai, Bangalore, Coimbatore, Nasik, Pune, Jaipur, Delhi, Gurgaon, Chennai, Kochi. Everywhere we are doing events on nearly monthly basis. On an average, where people take month or 2 months to maybe plan one event, we are doing 18 full-scale events. So we absolutely believe in the power of offline networking, bringing people together. और क्या है ना, if you're bringing 50, 70, 300, 500 startup founders, investors, other ecosystem players along, जैसे आप और हम हैं, तो उसमें वैल्यू तो बनने ही वाला है ना. That actually remind me one video of Elon Musk, इसमें वो बोलता है कि आप अपने को जितना टाइम दोगे
2 साल का काम को अगर 2 महीना दोगे तो वो 2 महीना में आप कंप्लीट करोगे. So we are able to pull out, get a presentation activated for another event in less than 2 hours. So वो जहाँ पे दूसरी कंपनी 2 हफ्ते तक सोचेगी कि भाई right. उस दिन हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे. Like we have narrowed it down to a science, we have narrowed it down to processes. तो इसलिए the effectiveness of a 400 people powered room at our summits or our networking event of 70 people goes very high because वो रूम में सब चार्ज अप आते हैं. हमारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का नाम है 3x इवेंट्स, जिसकी कोर फिलॉसफी उसका नाम 3x इवेंट्स इसीलिए है कि जो भी आपको दूसरे की इवेंट में मिलता है उसका 3x वैल्यू लोगों को दो. चाहे वो स्पॉन्सर हो, ब्रांड पार्टनर हो, आपका गेस्ट हो, आपका डेलीगेट हो, जो भी हो. जब आपकी कोर फिलॉसफी में ही एक्स्ट्रा वैल्यू डिलीवर करना है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उसका 3 गुना वैल्यू दो. बिकॉज फ्री इवेंट में मैं प्रोडक्ट हूँ, कुछ तो आपको बेचना है ना. मतलब कोई चैरिटी हाउस थोड़ी हो आप. हाँ राइट, करेक्ट. कुछ तो आप कर ही रहे हो. जिधर भी कुछ फ्री मिल रहा है मतलब यू आर द प्रोडक्ट. You are the product. Right. When you started on your entrepreneur journey, what is this nonsense to think कि सारे फाउंडर ही गरीब होने चाहिए. मतलब ये मिथ बनाई किसने और क्यों बनाई. आप लोगों को रियलिस्टिकली बोलो ना कि स्टार्ट एट अ टाइम व्हेन इट्स राइट फॉर यू. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग अ गुड जॉब, फीडिंग योर फैमिली, ग्रोइंग योर फैमिली, बाइंग अ हाउस, बाइंग अ कार. सारे ड्रीम्स के स्टार्टअप में ही बनते हैं. Right. So startup when it's 100% you're sure कि this is a journey you're ready for and there are certain things you need to be ready to pay. हमें तो स्टार्टअप इंडिया की टीम से कॉल आ गया था 6 महीने पहले. यू नो कि हम स्टार्टअप इंडिया से हैं, मोहित जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें करना चाहिए था. तो हमें लगा शायद पैसे वैसे देने हो. यू नो गवर्नमेंट है, स्टार्टअप इंडिया वाले. हमने तो मांग लिए. उन्होंने बोला अरे सर पैसे दोगे क्या. तो इज लाइक नहीं हम तो गवर्नमेंट है, हम थोड़ी पैसे देंगे आपको. बट वी कैन अलाउ यू टू यूज द स्टार्टअप इंडिया नेम, वर्क विद यू, डू पार्टनरशिप. पर वो इवेंट फ्री करने पड़ेगी. तो वी हैव टू वेरी पोलाइटली से नो बिकॉज हाउ वी लुक्ड एट इट कि उसमें वापस ऑडियंस फिल्टर नहीं होगी. लाइक यू नो यस रितेश अग्रवाल एंड जेप्टो वाला गाय became very good founders from college days. Okay, but you talk to a normal 18-year-old and 21-year-old, they should not be starting up. Okay, वो रितेश अग्रवाल 10,000 में एक स्टूडेंट स्मार्ट निकला जिसने अच्छा स्टार्टअप बनाया. अब बाकी 9,999 स्टूडेंट के स्टार्टअप्स की आइडियाज, इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन सुनो, उस बंदे को तो टीम मैनेज करने नहीं आती. Let's come to another interesting thing which we have normally seen, that जो success rate होता है of startups, once you cross the age of 30, 32, 35 to 45 range में if you are becoming a founder, तो वो startups का success rate ज़्यादा है compared to this early age like 18, 20, 22 year guy founding something. So tell me 2-3 things which actually differentiate these two category of startups. Absolutely. So my preferred age of working with people is that 30 to 35 to 45. Yes. Because मजाक कर रहा हूँ थोड़ा, बट 45-50 के बाद तो आप लाइफ में गिव अप कर लेते हो. अभी क्या तो नई कंपनी चालू करनी, रिटायर ही हो जाएंगे. ओके, रिटायरमेंट एज भी लोग सोचने लगते हैं ना 50. इसके बाद तो सच्ची में सोचने लगते हैं. बाय दैट टाइम कपल ऑफ टाइम्स यू हैव मेडिकल स्केयर इन योर लाइफ, और एटलीस्ट योर फ्रेंड्स हैड मेडिकल स्केयर. 2-3 दोस्त तो मर चुके होते हैं, तब तो डर जाते हैं. व्हेन यू आर 18 to 30, आई फील आपको रियल लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस नहीं है. ओके, टेक अवे द हार्ड स्किल जो आपको कॉलेज ने इंजीनियरिंग में सिखा दी बुक्स में, बट आपको कस्टमर से बात करने नहीं आती, रिजेक्शन सुनना नहीं आता. आपको इन्वेस्टर प्यार से बात कर रहे हैं तो भी आपको रूड लग रहा है. आपको सेंस ऑफ लीडिंग अ टीम नहीं है. आपके पास जो सॉफ्ट स्किल EQ बोलते हैं हम, वो कम है. पैसा भी नहीं है. राइट. ओके, वेरी ऑफन आप 20-year-old से बात करोगे, वो अपने पिच डेक पे क्या लिखेगा, कॉम्पिटिटर अमेजॉन. अंकल अमेजॉन मतलब
अब देखो तो सही, मतलब 50,000 लोग तो वो खाली बैक सपोर्ट के लिए रखते हैं, ओके। 50,000 तो उनकी कंपनी में खाली डेवलपर्स है। तो अमेजोन खाली वेबसाइट नहीं है, Amazon is a conglomerate which is of the highest led tech companies plus logistics company plus everything under the sun is Amazon. And so these things I find वो आपको 30 के बाद ही समझता है। 4 कंपनियां देख के जब एक बार बॉस जॉब से निकाल चुका होता है, जब लाइफ की रियलिटी हिट होती है, अच्छा काम करके भी हारे, थोड़ा डिप्रेस हुए, वापस उठे, तो by 30 to 35 as a person you're more mature, you're more realistic, you know life is not like getting out of college and being a Shah Rukh Khan. That's the difference you see in a mature startup founder. And by then he's also built relationships in the market. The 35-year-old founder knows distributors, knows production houses, knows his vendors, knows pricing. बुद्धू बनना उसका chances कम है. Correct. You know, there are so many of these soft skills what makes you in the long run a winner. A 20-year-old guy will probably throw more attitude at you if he's good at something. जब हम 20-year-old थे, हमको लगता we are from Narsee Monjee College, मैं CS और CA हूँ, हम KPMG में, we are so cool. Okay. At 35 you realize यार वो सबका कुछ importance ही नहीं था. Correct. So from that point of view, that maturity as a founder changed now. So whenever we were speaking at 20, that arrogance was coming out. At 35, it's not coming out. So what I gave to the world is giving back. At 35, because I am talking more maturely, I am attracting the like-minded people together. So again, like because 35 में जब आप कुछ डिसीजन ले रहे हो तो आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज फिल्टर कर चुके हो दिमाग में कि ये रिस्क है, वो रिस्क है. You are already settled and still you are taking the Does not guarantee your 35-year-old matured होगा. Still मतलब maximum people एक settled way में चल ही रहे होते हैं. But अगर उसके बाद भी अगर आप ले रहे हो, that means you have a solid foundation. You know that what you are doing, who you have to talk, how you have to talk. So but then like you mentioned that those skills. और आपको असली काम करना भी आता है. Let's get to the bottom line. Yes. Personality हटा दो. आपको 18 पे तो काम करना ही नहीं आता है. खाली बुक्स पढ़ के आप खाली लैपटॉप खोल के आप साइड में ट्विटर चालू कर लोगे या यूट्यूब चालू कर लोगे, उसको काम करना थोड़ी बोलते हैं. आपको जो बैठ के डिलीवरेबल्स देने पड़ते हैं 6 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, खत्म हुआ, टीम से काम कराओ, प्रोजेक्ट लाइव हुआ, क्या डेडलाइन है, लाइव करो तो करो, आई डोंट केयर. यू नो आपको पता है जो कोडिंग करते हैं कि भाई 10 बार सॉफ्टवेयर डीबग करना पड़ेगा, तो वो रियलिटी है. 18 पे थोड़ी आपको ये पता है, 25 पे थोड़ी ये पता है ये इतना करना पड़ेगा. 25 पे यू आर रेडी टू लेट गो ऑफ रिलेशनशिप्स विद फ्रॉम अ वर्क पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. अरे भाड़ में जाओ, क्या फर्क पड़ता है. 35 पे यू रियलाइज यार किसी से झगड़ा करके नहीं जाते, ये बंदा वापस इंडस्ट्री में आपको मिलेगा. You know, you're more controlled towards that, and sometimes the fact that you were more controlled, that worked out 3 months later कि उसको आपकी ज़रूरत थी और आपने because you were more matured, they were like अरे चलो साथ में काम करो. There are people I would have probably never worked with in my life at 20 and 25. At 36 when they give me a call, अरे मोहित ये करते हैं साथ में, I need your help here. हाँ भाई बोलना कब करना है. और फिर रियलाइज होता है यार वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, खाली गरम खून था. इट्स काम डाउन अ बिट. एंड बट इसमें होल थिंग है, यू शुड नेवर लूज वन साइड ऑफ योर पैशन. So this comes to my next question is, do you think that your like the CA degree helps you in your business and helps you what you are doing? See, to be very honest, I think like a CA only. I'm a proper KPMG trained chartered accountant. Okay, there is ABCDs that I do. Even when I did the international festivals, or I'm doing community building, all 95% of all my work happens on a spreadsheet. Okay. Firstly. Okay.
Okay, all my to-do lists are on spreadsheets, all my KPIs are on my spreadsheets, that's how we work. We just knew when to switch off the CA and let other part of your personality do the other work. Okay. But the way I plan, the way I execute, the way I think, I'm a very CA at heart. That's why every time when we build a company or a startup or consult, we keep the whole thing in mind कि cash flow positive रहो, finance पे ध्यान रखो. If the financial health of the company is not good, तो आप 3 महीने बाद कैसे चलाओगे? Yes. So CA is very ingrained in me, in that sense. And we do a lot of work, maybe not of audit or tax, but other things around the CA. Okay, so then let's talk about building a startup. Okay, so you are also CA, I am also CA. So to start a company, what all things are required as per your experience? One will be, of course, from the finance side, because that is very important to know, the viewers who are watching, that it's not that free में तुम कुछ कर सकते हो. So from finance side and from attitude or from manpower side, what should be the minimum thing someone should start with? How to execute an idea more than the idea itself. I see too many founders overthinking about an idea. मेरे लिए तो idea की value ही नहीं है. Correct. Ideas are dimes a dozen. Okay, no idea is as original as people pretend it to be. 99% तो आपका कॉपी किया, एक फीचर चेंज किया आपने खाली. तो लेट्स नॉट प्रिटेंड कि आपने पूरी कोई एक नई इंडस्ट्री इनोवेट कर दी है छोटी सी चीज़ से. इट्स हाउ यू एग्जीक्यूट, हाउ गुड इज योर एग्जीक्यूशन स्किल्स, योर नेगोशिएटिंग स्किल्स विद पीपल, गेट देम ऑन द सेम विजन एज योर्स. रिसोर्सेज चाहिए, आप कुछ भी कर लो. ओके, you have to look at businesses. If your startup is a long gestation startup that will pay you in 3 years, 5 years, 8 years, so you will have to look multiple verticals within the startup that can sustain you today. अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे कि भाई 3 साल बाद मेरा SaaS प्रोडक्ट लॉन्च होगा और 3 साल तक the whole world should fund me, I think that approach cannot work in India. Okay. Until you have unlimited resources. Yeah. Which I don't know how many founders actually do. So you have to pivot, repivot, be open to that. You have to learn survivability, sustainability from day one. कि आप कुछ भी हो, how can you give yourself 3 years to not fail? Because the whole world will try to fail you for 3 years. Right. Okay. So I think these are very important things when you're starting out. कि आप 3 साल कैसे सर्वाइव करोगे बिना फेल हुए ऑन योर ओन सेल्फ. सो अगेन दैट सेम थिंग उधर भी आ जाता है, दैट ऐसे बहुत से कम स्टार्टअप्स होंगे जो एक्चुअली ऐसे पैसे लेके, लाइक यू आर सेइंग दैट फॉर 2 years 3 years यू आर टेकिंग फंड्स एंड बिल्डिंग बिजनेस. दैट नेवर वर्क्स. लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में फाउंडर ही पैसा डालता है अगर उतना बड़ा सक्सेसफुल स्टोरी बनाना है, अगर बिग बिजनेस है. अदरवाइज एक 22 years kid coming and having no money, taking some money from family relative, that actually don't work in India. So then my next question will be, चलो startup तो कर दिया, but what all are the factors which contributes to the growth of a startup or scaling of a startup? The sharpness of the founding team and the founder. मतलब I have seen too many founders who are completely delusional about their product. Okay, बस पब्लिक नहीं खरीद रही है, उनको नहीं लेना है, आप वो समझने तैयार नहीं हो, पब्लिक को ब्लेम कर रहे हो. Okay, your product is not fitting into the market, and you're saying कि भाई मार्केट बुरा है. Okay, तो आप ये नहीं देख रहे कि भाई मैं रॉन्ग प्रोडक्ट इस मार्केट के लिए लॉन्च किया. You know, वो एक छोटा एग्जाम्पल, इंडिया में जब शैम्पू की बॉटल्स नहीं बिकती थी, somebody put shampoo in a pouch and made it for 1 rupee or 50 paisa or something like that, and that is still the highest sales in the whole country. So the whole, that was real innovation in a way. Okay, and then the brands who followed very quick behind that, कि they also realized कि अरे ये बिक रहा है, let's run behind this idea instead of just trying to sell a 180 rupees bottle. And India, the mass volume market allowed you to do that. Yes.
So look at founders who are not connected to the ground, who are not realizing कि भाई when I become 400 million users तब मैं monetize करूँगा. Does India ecosystem give you that bandwidth? कि आप 400 million तक खाली play करते रहो. Correct, because there are economic constraints on us. Right. We are not a reserve currency of the world. We'll just keep printing the dollars and fund Silicon Valley with that. We have to give an ROI back to our investors. Yes. So how many founders are actually very sure about their market firstly? कि आपने पहले 1000 सेल्स ही नहीं किए. Right. और आपने 1000 सेल्स में 1000 कस्टमर्स से बात नहीं कर रहे हो, यूजर्स से बात नहीं कर रहे हो कि यार मुझे तो ये प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं. Like on an average, I get 4 calls or emails a month about some event management tech solution. Okay, and I have unfortunately been sometimes very critical to these founders. यार आप तो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जो मुझे चाहिए ही नहीं. फिर आप बोल रहे हो मुझे पैसे दे दो. आप मेरी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है इवेंट मैनेजमेंट की वो सॉल्व करो ना. Right. मुझे विजिबिलिटी लाके दो, ऑडियंस लाके दो मुझे. नहीं, वो नहीं करना किसी भी प्लेटफॉर्म को. They want to all talk about tech enabled, event experience. आप फोन में जाओ, आप ऐप देखो, you will see exactly who else is in the event. Okay, now my experience on some of those things was when I go to a 50-60 people event. क्यों मैं उन लोगों को LinkedIn पे मैसेज नहीं कर रहा? क्योंकि मुझे उनसे फिजिकली मिलना है. और आप अब मेरी फिजिकल इवेंट में वापस ऐप डाल दी है. सेंस नहीं बनता. सो आई फाइंड इट अ फ्लॉ कि आई फाइंड इट रूड अगर कोई फिजिकल मीटिंग में फोन पे बैठा है तो. जस्ट कुछ टाइम पहले इन पॉडकास्ट यू आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू सिलेक्ट फाउंडर्स. एक आपने एग्जांपल दिया कि लोग, आई थिंक मैंने भी ऐसे बहुत टाइम देखा कि जस्ट टू सेव मनी पीपल टेक CFO, CTO. भाई तू CA कर रहा है, तू आ जा मेरा कंपनी में CFO. सेव मनी, CTO. So that comes to a question that we will talk about the league, like which we are talking 35 to 45. If you are in that range and you need a founder, first question is whether you need a co-founder. Whether you need a co-founder from your experience, and if yes, then what all qualities or what all things you should check with him or her. See, if you're long term having co-founder which is good and which you can get along with, does reduce your work, your burden, helps you different wall board to bounce back ideas from, etc. Yes. So having a co-founder is a very good thing to have in a business. Before that, learn how to get along with co-founders. Having realistic expectations out of each other, not putting your ego first on either side. How do you manage conflict within the relationship? Don't get a co-founder because you want to save money. That should be the first checklist. This is my biggest point of view, because I don't believe making people co-founders is a good way to save money. Okay, because maybe that person said a yes to you now because he's not getting the required job. And he thought maybe the way you oversold the idea to him कि 6 महीने में तो ब्रो फंडिंग होने ही वाला है. Okay, and you will be the first one picking the money. You, instead of making 50 lakhs per annum, you will to make 20 करोड़ का वैल्यूएशन ब्रो. तो वो बंदा ना 6 महीने में 8 महीने में रियलाइज होएगा कि फिक्टिशियस टॉक्स पे घर नहीं चलता है. Correct. He has hard expenses at home. He has to put in 1 to 2 lakhs a month. Not counting that he has to pay house EMI or car EMI. Okay. Just because you want to be a co-founder or founder doesn't mean your wife should not go on vacation. Yeah. तो वो sort करो पहले. Is she on the same page as you? तो ये चीज़ें important है. Okay. And then after that value systems आपका same है क्या दोनों का? दोनों तीनों co-founders, founders, भले ही आपका वैल्यू सिस्टम हुआ कि चलो मार्केट में लोगों को लूटते हैं, मिलके लूटे एटलीस्ट. ओके, मतलब बट वो वैल्यू सिस्टम सेम है. ऐसा नहीं हो कि आप मार्केट में लूटने के लिए बैठे और आपका को फाउंडर इज लाइक नो,
हम तो हरिश्चंद्र है. Mm-hmm. But then again, it will not work out. Yes. Because the way you'll operate will be different. And value system important है, actual capability भी important है. कि a lot of times हम जो CA कर रहा है, as you said, उसको co-founder बना लोगे. तो यार वो CA कर रहा है, मैं 14 years experience लेके बैठा हूँ. There will be a chalk and cheese difference. Yes. In the quality of what output he'll give and what output I'll give. तो वो चीज़ें भी important है कि sometimes work that you can pay a consultant to do. आप वो ज़बरदस्ती co-founder बना के किसी और से करा रहे हो. Just because you don't want to pay that money. And that consultant might be a bigger expert than that co-founder in that field. So don't replace money with co-foundership. So Mohit, you have been to like Dubai, you mentioned South Africa. So from government intervention perspective in startup ecosystem, what all things you see in like countries like Dubai and South Africa? How government push the startup ecosystem? The way the Indian government is currently doing Startup Mahakumbh, Startup India, you cannot replace the effort put in by the government of India and Modi ji and to give a big push to the ecosystem, to do the registrations, give out tax benefits, give out little bit of incubation money, little bit of lower end pay loans, build a community as such, do mentorship and take the initiatives. I think that's one of the highest in India. Okay. हाँ, Indian business करने का जो ecosystem है जो difficult है कि हमारे laws ही archaic है, very difficult to follow है, compliances will kill your back. Yes. Okay, वो इंडिया का overall flaw है. Okay. जो नहीं गया है. But there is a big impetus and push from the government as such. I got a call from Bhopal recently. Okay. Gentleman called me to say, sir, हम incubation centers चलाते हैं, and this is not me affiliating with any political party or whatsoever. This is an actual on-ground call that I got. कि अभी 4 years से some XYZ party was in power, तो we got no funds for giving away to startups. अभी बीजेपी वापस आ गई है, हमें पता है इंक्यूबेशन सेंटर्स के पास वो आएंगे कि स्टार्टअप्स को फंड्स दो. ओके, so there is on ground reality in our politics also that there is a push towards startups from the center coming in, and which is very positive to see. Is it commensurate with what the market or ecosystem requires? No. Because अभी भी हमारी ग्रांट है 20 लाख रुपए की. असली सीड कैपिटल जिस तरीके के लोग आइडियाज टेबल पे ला रहे हैं, उनको चाहिए 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़. I don't know who will give 50 crores to an idea, because definitely the VC and angel ecosystem is not giving. Right. Not just to an idea. वही आइडिया अमन गुप्ता लाएगा तो दे देंगे, which is not wrong because he's proven himself. But for so एक वो रियलिस्टिक जो प्रॉपर एक कंपनी चलाने के लिए 1 to 3 या 5 करोड़ चाहिए. Yes. वो इंडियन इकोसिस्टम में मिसिंग है, एंड आई डोंट नो इफ इट्स ओनली गवर्नमेंट्स जॉब टू गिव इट. देयर इज आल्सो मार्केट फोर्सेस, राइट? Yeah. So I feel that gap needs to be filled in by market forces rather than just the government. If you have option to start a new company, so whether you will choose India or Dubai? Well, I can अभी मैं थोड़ा बायस हो सकता हूँ because मैं दुबई एक्सपांड कर रहा हूँ the next phase में 2 महीने के अंदर ही. I will still choose both. I wouldn't say either or. Okay. Diplomatic answer. No, it's because India में अभी भी my soul is still in India. Okay, that I have decided. I am not moving abroad again. मुझे बाहर नहीं रहना पूरी लाइफ, कुछ नहीं करना, तो मैं इंडिया के लिए ही बनाऊंगा. But there are specific advantages of being in Dubai also. Yes. Okay.
सो इट हैज़ टू बी बिट ऑफ बोथ. वो थोड़ा ग्लोबलाइजेशन कंपनी में ना हो. टाटा का भी मेजॉरिटी रेवेन्यू तो अब्रॉड से ही आता है अब. तो वी कैनॉट से कि टाटा इज नॉट अ इंडियन कंपनी एट हार्ट. It's not about actually revenue. It's about, like you're mentioning, that compliances. या सी. तो वो जो कंपनी जो रेवेन्यू ला रही है उनकी अब्रॉड से, उधर भी तो रजिस्टर्ड है, उधर भी तो उनकी शेयर होल्डिंग है, फर्दर कंपनीज है, उधर भी उनके एम्प्लॉयज है लोकली. करेक्ट. सो थिंक फ्रॉम दोज पॉइंट ऑफ व्यू कि टेक्निकली टुडे यू कैनॉट जस्ट से आई विल ओनली केटर टू इंडिया. Infosys, which is one of our highest celebrated companies, TCS, Wipro, सब लोग ही तो इंटरनेशनल बेस भी लेके बैठे. Yes. एक बेस इंडिया है, दूसरा बेस अब्रॉड है. सो आई थिंक you need presence everywhere. If I talk to somebody in New York and if I say I have company only in Mumbai versus I say I have company in Dubai, Mumbai and Singapore, I'll get a better response. Right. That's just the unfortunate truth. Correct. And if you feel that is wrong or biased, if somebody called you saying he's calling you from Los Angeles, and another call you got from Uganda, will you not be biased towards picking up the Los Angeles call first? Yes. Absolutely. Correct. Because you're like, I don't really know anything about Uganda. I don't really trust it as a country. So दुबई ने वो एक इंटरनेशनल इमेज भी बनाई हुई है, which has been very which has been done not organically. मतलब there's been effort gone into it. Yeah. You every 3 years when you visit Dubai, you can see a change and improvement in something. Doesn't make it a flawless city, but सबके advantages है. Hopefully now gift city over the next 5 years comes up, but वो स्लो मूवर एडवांटेज है ना हमारे पास. वी आर नॉट लाइक दुबई बन चुका है, हम अब ट्राई कर रहे हैं बनाने की. So now we will come to some personal questions. Sure. So what is that one quality which you think contributed most to your success story? I think relentlessness and continuous improvement in life. Never being satisfied and saying आज हम कुछ और नया करेंगे और अच्छे से करेंगे और बेटर करेंगे. Okay. I am very rarely disappointed after putting in the hard work. So even if I fall 3 times, I'm like, okay, I did it, the good work. Let's do it differently today. Okay. So as a founder, आपके पास अगर हफ्ते में 6 दिन है, so 3 days will be good days, 3 days will be bad days. Yes. वो तो होना ही है. Virat Kohli and Sachin Tendulkar will also get out on a duck. But on the good day, have you made it worth it? Yeah. So the moment I get some opportunity, I know how to pounce on it. I know how to win on that day. Okay. So that you need to learn. कि on the good day, not to let good day go by and make it average. Yeah. That's when you make the most out of it. And what is the best advice you have got in your life? Best advice I have. So I don't know best advice I have got, but I'll give one honest advice. That word passion is also very overused in our lives lately. कि जैसे हर चीज़ ही पूरी दुनिया में passion पे चल रही है. Sometimes panic gets more work done at work. Right. Okay, in office than passion. तो थोड़ा when I say panic, I don't mean the negative side of the word panic. I mean वो थोड़ी anxiety, stress, pressure. You have to get it done now and get it rolling, up and running and up and out in the market, and what needs to be done, launch it, do it, fail, get up, redo it. That has more value than just passion. Okay. So suppose you are a startup founder and forget whatever you have. I just give you 1 CR. So how will you use that money to what kind of business you will make? 1 CR is a lot of money, by the way. Yeah. So if I have to do now in today's time,
हम साइड में एक छोटी कंपनी ऐसे ही टाइम पास के लिए बना रहे हैं. उसका नाम गेमेजॉन है, विच इज़ अ कार्ड गेम्स एंड बोर्ड गेम्स कंपनी. Okay, so it will be a D2C brand, D2C first brand, or eventually omni-channel. Because we feel Amazon और Flipkart का ओरिजिनल प्रोडक्ट बुक्स थी. बुक्स, गेम्स, ये सब चीज़ें हैं, बहुत लाइट वेट होती है, स्मॉल पैकेजिंग में आती है, कॉम्पैक्ट में आती है, पेपर प्रोडक्ट्स होता है. इन पे जो डिज़ाइंस होती है उसके कारण उनका एक खुद का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है. सो इट्स नॉट जस्ट इजी टू रेप्लिकेट राइट अवे. इट्स नॉट अ जेनेरिक प्रोडक्ट. करेक्ट. So maybe I'll invest in a more physical experiential product, something like this. Okay. And one hard lesson which you have learned till now from your experience? There is nothing called as free lunch. Free lunch. You need to go work on your own startup yourself. It's your passion or it's your dream, not everybody else's dream. तो आप जबरदस्ती क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पूरी दुनिया अपना काम छोड़ के आपके ड्रीम पे काम करेगी? ओके, एवरीबडी इज अ फ्रेंड ऑफ सक्सेस. जब आप सक्सेसफुल हो, एवरीबडी इज योर फ्रेंड. द मोमेंट यू आर नॉट सक्सेसफुल, एवरीबडी क्वेश्चंस कि आप तो आइडिया ही गलत था, आपका तो स्टार्टअप ही बुरा था, आपकी तो आपको चलाना ही नहीं आता था, ये तो पहले से ही जानते. People bring you down during that phase. Yes. And you don't need to let it get into your head. And then at the same time, when you are winning again or in a success mode, that time you don't need to take a revenge out on people. Yeah. Over bother with, like be calm, be cool. Okay. So one last thing or last advice for startup if you want to give to our viewers. Go out and implement, execute. बनाओ, बेचो, हारो, बनाओ, बेचो, हारोगे तो जाके जीतने का तरीका सीखे हुए कि how do I take it to the winning recipe now. And yes, one more thing which I just forgot, and I will again ask you that, do you think that in initial phase of any startup they should look at work-life balance? See, so I look at it in this way. जैसे लाइफ में 4-5 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती है. एक है फैमिली, पर्सनल लाइफ, योर रोमांटिक साइड ऑफ लाइफ. एक हेल्थ, चौथा आपका करियर या स्टार्टअप या आप जो भी बोल लो, एंड 5वें फ्रेंड्स. या तो, और इसको अगर हम 1 to 5 के स्केल पे रखें तो वर्क लाइफ बैलेंस में आपको हर चीज़ स्केल ऑफ 3 पे मिलेगी. ओके. या ये, और आप ये पांचों में 5 out of 5 स्कोर कभी कर ही नहीं सकते हो. लेट्स बी रियलिस्टिक. करेक्ट. ओके. Very rarely there are some people who are privileged enough कि उनको out of all these 5 things they got the score of 5. Yes. So you have to see कौन से में 1 or 2 का score होगा, कौन से में 5 होगा. So if your startup is important for you to get the score of 5, let's be realistic, आपके friends के score पे 5 नहीं होगा, उधर 1 या 2 पे होगा. Okay. और आपकी health के score पे unfortunately 1 या 2 कम होगा. Okay. So you will now, moment you put health back on priority, so now you can't go out eating with friends and drinking with friends and partying with friends late night, because then you're the boring person in the group. Yeah. Relatively speaking. So you'll never have the complete work-life balance ever, right? Ki if you want to really succeed at one thing, it's impossible. As a founder today, say last 1.5 years, I have traveled over 60-70 times. Okay, so that's not work-life balance. Sometimes it's a 5 a.m. flight, 2 a.m. flight, आप पहुँचोगे
इतना बुरा हाल है, आपको बोलेंगे अरे सर ये फ्लाइट फुल है, सर रनवे पे प्रॉब्लम है, सर ये 5 बजे उड़ेगी. So where's my sleep? Where's my health? There's gonna be compromises because you're building a new company. So you have to see कि what's more important to you. And if you're not sacrificing on other things, तो आपका startup भी 3 के scale पे रहेगा. Correct. 5 पे नहीं पहुंचेगा. And there's nothing wrong in it. So Mohit, thank you for your insightful lessons which you have provided to our viewers. So we have something for you. So that is it for today's. I hope that you all have learned a lot from Mr. Mohit. So stay tuned to our channel and अगले एपिसोड में हम और एक गेस्ट को लेके आएंगे जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे so that you can grow your startup.